Jai Hind to respected principal sir, anyone and all present here. As you know that today is the fourth day of 1 week national workshop on the theme entitled New NAC Accreditation Framework and Awareness, which is organized by IQAC Government Digvijay Autonomous PG College in collaboration with Arts and Science College, Nachalgaon Road, Pulgaon, Maharashtra. And as we know that theme of the today's session is institutional value and best practices that will be delivered by Dr. Mary Rai from Indira Gandhi Government PG College, वैशाली नगर, भिलाई। अभी जिस तरह से हम और आप देख रहे हैं कि एक लहर सी है और एक बहुत ही सकारात्मक सोच लेके जो है प्राचार्य महोदय सभी को लेके साथ चल रहे हैं ताकि हम कोई एक मुकाम पा सके, और वो एक वो हमारा एम है, वो पर्पस है नेक ए। उस तारतम्यता में आज का जो थीम है, जैसे कि आपको मैंने बताया, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो कि क्राइटेरिया 7 का थीम है। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं डॉक्टर राहत इंदौरी साहब में हमारे साथ है, आपके साथ है, जो प्रिंसिपल सर का जो उनको मोटा है, उनको विश है, वो बिल्कुल फिट बैठता है यहाँ पे। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब जो नहीं रहे, बहुत ही अच्छा उन्होंने ये लाइन कहा है कि सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे। सर के शब्दों में, सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे जब तक आपका हाथ मेरे हाथ में रहे। सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे जब तक आपका हाथ मेरे हाथ में रहे, और शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। तो इन्हीं लाइनों के साथ मैं सम्मान हमारे संस्था प्रमुख डॉक्टर के चांडेकर सर को आशीर्वचन कहने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। डॉक्टर चांडेकर सर। सेवन क्राइटेरिया को केंद्रित करते हुए नेक अवेयरनेस ऑनलाइन ऑफलाइन इस वेबिनार के आज चौथे दिन आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पूर्व में वर्मा जी संबंध में जो अभी 4 दिन की वर्कशॉप हुई है और आगे होने वाली है, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला और कुछ शब्दों का भी हमारा उत्साह बढ़ाया। तो मैं यही कहूँगा कि दिल में तमन्ना है तो रास्ते निकल आते हैं, दिल में तमन्ना है तो रास्ते निकल आते हैं, और दिल में तमन्ना नहीं है तो बहाने निकल आते हैं। आप सभी जिस उत्साह के साथ, जिस समर्पण के साथ एक अपना नैतिक कर्तव्य समझते हुए अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी क्षमता का उपयोग कर रहे हैं, वह निश्चित ही आपके चिंतन को, आपके अध्ययन अध्यापन को और महाविद्यालय के प्रति आपकी समर्पण और जिज्ञासा को दर्शाता है। यही होना भी चाहिए कि हम सब जिस उद्देश्य और मकसद से संस्था में हैं, हम सबका दायित्व है कि अधिक से अधिक संस्था के विकास, अधोसंरचना विकास और विद्यार्थियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ साथ एक अच्छा शैक्षणिक वातावरण हम सब मिलकर उपलब्ध करें। इसी उद्देश्य को लेकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारी संस्था गौरवशाली संस्था प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश और विदेश में अपना स्थान रखती है, वो सब आप ही के कार्यों से, आप ही के प्रयास से इस संस्था का ये गौरवशाली इतिहास और आगे बढ़ रहा है। तो 4 दिन की इस वर्कशॉप में
महाविद्यालय के साथ न्यू आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज नचनगांव गुड़गांव महाराष्ट्र की संस्था जो नेक से ए ग्रेड संस्था है, और वहाँ के प्राध्यापकों का भी हमने 1-2 दिन पहले नेक क्राइटेरिया पर व्याख्यान सुना। थोड़ी सी तकनीकी कुछ कठिनाइयां आई है, लेकिन एक बहुत प्रगाढ़ अनुभव और संस्था के प्रति उनकी जो लायबिलिटी है वो दर्शाती है। इन कार्यक्रमों के बाद जितने भी लोग जुड़े हैं, बहुत अधिक संख्या है, बहुत सफल वर्कशॉप है। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी लोग अपनी अपनी संस्थाओं में 7 क्राइटेरिया की जानकारी ले रहे हैं। कुछ प्राचार्यों ने यह भी अवगत कराया कि बहुत सी वर्कशॉप हुई, 1 दिन की, 2 दिन की, 1 दिन में 7 क्राइटेरिया, 2 दिन में 7 क्राइटेरिया बता तो दिए गए, लेकिन बाद में समझ में कुछ नहीं आया। और स्वाभाविक है, हम 1 दिन में 1 घंटा, सवा घंटे, 1.5 घंटे आप देख रहे हैं, फिर भी ऐसा आपको लग रहा होगा कि शायद और जानकारी मिले। और इन जानकारियों में निश्चित ही प्रत्येक प्राध्यापक ये अनुभव कर रहा होगा, ये तो हम सब कर रहे हैं, इस क्षेत्र में हमने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसको संकलित करना, उसका प्रस्तुति हम नेक में नहीं करते। डॉक्टर कुर्रे सर अभी इसी पर कह रहे थे कि कुछ ऐसी बातें कल के प्रशिक्षण में डॉक्टर राव ने बताई है कि वो प्रशिक्षण में दी गई जानकारी पर हम उसे अतिरिक्त रूप से कर सकते हैं, वो सब हमारे यहाँ पर है। तो उन्होंने इसके लिए एक अलग से प्रयास करने की भी सोच रखी है। यही मकसद था इस कार्यशाला का कि हम नए इनोवेशन आइडियाज सुने। वो क्राइटेरिया है आज कि सबसे महत्वपूर्ण है कि उस संस्था में हम इनोवेशन पर और हमारी इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिस, बहुत से संसाधन हैं, सुविधाएं हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो क्या बेस्ट प्रैक्टिस में आते हैं या नहीं आते हैं। आज मैडम मेरिती राय, डॉक्टर मेरिती राय, प्रोफेसर इंग्लिश डॉक्टर शासकीय महाविद्यालय वैशाली नगर से हमारे बीच आभासी पटल पर जुड़ रही हैं। मैडम 7 क्राइटेरिया में जो जानकारी हमको 7वें क्राइटेरिया की दे रही है, इसके अलावा भी आपको पूरे क्राइटेरिया का बहुत गहन अध्ययन है। आपने इन सभी पर बहुत अच्छा काम किया है। आपकी संस्था भी पिछले नेट में B+ थी, अभी फिर नेट होना है, निश्चित ही उसमें आप जैसे प्राध्यापकों के द्वारा किए गए काम से प्रोग्रेस ही होगी, उसमें बढ़ोतरी होगी, ऐसी आशा विश्वास हमें है और शुभकामनाएं हैं। तो इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट बातों को हम सुने, साथ ही साथ न्यू आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल और उनके स्टाफ जो अपनी संस्था में भी, अपने महाराष्ट्र में बहुत सी संस्थाओं में इस माध्यम से प्रशिक्षण का लाभ ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि यह बाकी दिनों में भी बहुत सफल हो और इस सफलता का पूरा श्रेय हमारी IQAC टीम और सभी प्राध्यापक को है, जिन्होंने व्यस्ततम समय में भी इस कार्यशाला के लिए समय निकालकर इसे सफल बनाया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं, क्योंकि आप जैसा कि देख सकते हैं डॉक्टर मेरिल राय मैडम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके ब्रीफ बायोडाटा और इंट्रोडक्शन के लिए मैं डॉक्टर त्रिलोक सर को आमंत्रित करता हूं। सर। Thank you so much, Dr. Sir.
It is my pleasure to introduce today's speaker, Dr. Gandhi Government PG College, Vaisali Nagar, Vasai. She is head of Department of English in Indira Gandhi Government PG College, Vaisali Nagar. She has teaching experience of approximately 26 years in UG and PG classes. She had regular many publications in different national and international journals. She is registered as a guide in Hemchand Yadav University, Durg. She has been in steering committee of NEC for all the three cycles of his college, and she was NSS program officer for almost 14 years and won award for best NCC officer in 2016. And she, along with her unit, won National Young Leader Award of NSS by Ministry of Youth Affairs, New Delhi in 2016. She is author of book Divine Relations, a collection of own poems. Recently, she has been interviewed live during International Poetry Festival, Belagavi, Karnataka. She is going to deliver her lecture on criteria 7 of NEC, institutional values and best practices. I hope we will learn a lot from her lecture. Once again, on behalf of our college and IQAC committee, I welcome you, madam. Thank you so much. थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा डॉक्टर त्रिलोक सर ने पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से मैडम के बारे में हमको इंट्रोड्यूस किया। विदाउट डिले नाउ रिक्वेस्ट डॉक्टर मेरनी राय मैडम। मैम Thanks a lot, sir. माइक ऑफ कीजिए मैम। Okay, thanks a lot. First of all, I would like to extend my salutation for inviting me to this platform of one week national workshop on new net accreditation, framework and evaluation. My sincere and warm gratitude to Principal Dr. K.R.L. Dandekar of Government Dignity Autonomous City College, Rajnandgaon, and Dr. V.V. Hedge, Principal Arts and Science College, Rajnandgaon, Maharashtra. And also to IQAC coordinator Dr. Divangan, Dr. Dawandi, for IQAC co-coordinator Dr. Lo, Dr. Majid Khan, and all the organizing committees. And also to the eminent person in this food that will be present in this one national work. So, my today's talk would be on criteria 7, which is institutional value and best practice. Actually, we know, I think that this platform is a great platform because nowadays, when you go for next accreditation, we are not alone. With the pretext of such workshop, we get guidelines, we also come to know about what all preparation we need to for the piercing, for the SSR, for different colleges. We get ideas from big and small and colleges in the outskirts of some colleges. And sometimes we can have some good ideas even from very small colleges in the outskirts of the villages also. So this is a very good platform, I think. Actually, these days next preparation is like a teamwork.
due to due to the the well-being, well-being, due to due the to this this higher higher commissioner commissioner of of education, education, such such workshops are workshops being are being repeatedly repeatedly being being organized organized nowadays, nowadays, and and also also by the by the team, team, efficient team efficient of team of science science college, college, girls girls college, college, such such workshops are workshops being are being organized, organized, and we are and we are getting getting continuous continuous guidance. guidance. Okay. Okay. So So when we when we come come to to talk talk about about an an educational educational institute, institute, we we know know we we ought ought to to develop develop a human human resource, resource, that is that the is the student. student. We We develop, develop, we we give an give an all-round all-round development, development, isn't it? isn't it? Apart Apart from from degree, degree, we we also also impart them impart them skills, skills, we we develop their develop their personalities, personalities, we we also also inculcate inculcate values. value. So, So, when we when we come to come to values, values, you you know know in in India India values values play a play a very very important important role. role. If we If we see see from from time time immortal, immortal, Indians have Indians have been insisting on insisting the on the values. We values, we always always focus on focus the on the values. values. And And being being an an institution or institution a or a college, we college, are we are also a also a part of part this of the social, social of this of this society. society. So So we we also also need to need to contribute contribute towards towards uplifting uplifting or or maintaining these maintaining this values. value. So So here we here we come come to to criteria criteria 7, 7, institutional institutional values values and and best best practices. practices. So So please please share share my my presentation. presentation. Okay, ma'am. So So as as you you all all know, know, criteria criteria 7 is 7 is institutional institutional values values and and best best practice. practice. It It focuses focuses on on what what all all values values we are we are inculcating, inculcating, we are we are nurturing nurturing in an in an institution. institution. Duty, Duty, values va- of of concern concern towards towards environment, environment, values values of of preservation preservation of or of or conservation of conservation of energy. energy. So So different different types of types of values. values. And And what what practices practices are are we are we are doing doing related to related these to these values. values? So, 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 so let me let me start start with with the the next. next. So So institutional institutional values values and and best best practices, as practices, we as we all all know, know, it it is is of of 100 100 marks. marks. So So in this in this 100 100 marks, marks, we we have have three three key key indicators. indicators. We have We have three three key key indicators. indicators. So So the the first first key key indicator indicator is, is let's let see. The the first first key key indicator indicator is is institutional institutional values values and and social social responsibility. responsibility. It has It has 60 60 of of 60 60 marks. marks. Let's Let's come come to the to the first first parameter or parameter of first first key key indicator, indicator, institutional institutional values values and and social social responsibility. responsibility. Next, Next, so so please please next. next. So So this this key indicator indicator previous previous Ye? previous previous year. so So uh, next next, yeah, yes, let it let be it here. be here.
So, So, institutional institutional values values and and social social responsibility. responsibility. It It has has 11 11 parameters. parameters. So, Out of out these of these 11  11 parameters parameters are are quantitative and and some some are are qualitative. qualitative. So the So, quantitative quantitative parameters parameters are are 7.1 the the native native energy energy sources, sources, conservation conservation facilities, facilities, 7.1.5, 7.1.6, it is 7.1.6 is about about quality quality audit. audit. 7.1.10 7.1.10 above above is it is it is about about code of code of conduct. conduct. Coming to Coming to the the qualitative qualitative parameters, parameters, 7.1.1 it 7.1 is is about about gender gender equity. equity, 7.1.3 it 7.1.3 is it is about about management management of of degradable degradable and and non-degradable non-degradable waste. waste. 7.1.3 7.1.3 it is it is about about inclusion, inclusion, tolerance tolerance and and harmony. harmony. And At 7.1.9 it 7.1.9 is it is about about sensitization sensitization towards towards constitutional constitutional obligations. obligations. And At 7.1.11 it 7.1.11 is it is about about celebration of celebration of national and national and international international days days given even them. this. So, So, in this in this presentation, presentation, I I would will be be first first dealing dealing with with quantitative quantitative parameters. parameters. As As अपन सब अपन सब जानते हैं कि जानते हैं कि quantitative quantitative parameters it parameters is it is being being judged judged or or evaluated by evaluated by DVV. DVV. So So, there is a there is a one one difference, difference, major major difference difference which we which we all all know know about about quantitative quantitative and and qualitative qualitative parameters. parameters. So So quantitative quantitative parameter as parameter in as law in it law will it be will be being being judged or judged or assessed by assessed by DVV. DVV, And and in in that that case case अगर अगर DVV को DVV को लगता है लगता कि है कि there is there is some some they they need need some some more more information, information, they they want some want some additional additional information, so information, so we we get a get a chance chance to to furnish furnish those those information information in in quantitative quantitative parameters. parameters. But But in in qualitative qualitative parameters parameters which which are are being being judged judged or or assessed assessed by the by the peer peer team team directly. directly. So So here we here we have to have be to be very very much much well well prepared prepared because because the peer team will be directly present in the institution, and they can ask for any documents, and we should have all at once. Here we don't get any time, as the DVV gives 15 days time to produce the documents. Here we don't get. So this qualitative is also very important in that way. So coming to the first point of quantitative, 7.1.2. The next slide, please. 7.1.2. So this parameter, it is environmental consciousness and sustainability. So in this parameter, that the question that is asked is, the institution has facilities about alternate source of energy and energy conservation measures. Here they उन्होंने 5 पॉइंट्स दिए हैं. Solar energy, biogas plant, willing to the grid, sensor based energy conservation, use of bulbs, etc. So दिस इज लाइक अ yes and no टाइप ऑफ आंसर. आपके कॉलेज में, आप हमारे महाविद्यालय में जो भी सुविधा है हमें उनको टिक करना होता है. और we have to produce geotag photographs related to the facilities that we have been produced, that we have tick mark. So other than that, there is another point, any other relevant information. मैं इस पॉइंट में ज्यादा फोकस करना चाहूंगी. एनी अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन. कई बार ऐसा होता है, इट समटाइम्स इज हैपेंस दैट हम ऐसा कुछ वर्क करते हैं कि हर एक पॉइंट से, जो कि इन पांचों उन्होंने जो पूछा है उससे कुछ रिलेटेड ना हो, कुछ अलग हो, पर ये इसी पॉइंट से बेस्ड है. तो वी आर इन डाउट कि हम उसको कहाँ
शो करे उसको। तो ये जो पॉइंट होता है एनी अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, वो एक बहुत अच्छा जगह है, अच्छा स्पेस है जहाँ की हम अगर इससे रिलेटेड, इस पॉइंट से रिलेटेड अगर वी हैव डन एनी वर्क, वी कैन प्रोड्यूस और वी कैन शो इट हियर। So the this point 7.1.2, it talks about alternate energy resources. We all know that these days we are very much concerned about energy conservation. Each and everybody targets towards saving electricity bill. We all know in college we use different sources of energy, rooms, different practicals, libraries, and where all electric appliances are working. AC, coolers in summer, everything. So, computers, lots of computers in lab. So, the bill that comes in a college is always so high. So, we should find out some measures in which we can conserve the energy. So, the first point that the NEC has given is about solar energy. So, you all know it is focused on use of solar panels. So, many colleges are using solar panels and many colleges are unable to afford because it is comes in a high range. So, actually, here, as I told you, any other relevant information, I would like to focus on this point. So if your institution is unable to use the solar panels, actually we can do something other to save energy. For example, if you have a home science department, lots of cooking practicals are being done in home science practical. At least they can have solar in solar be able to save the fuel, the cylinders, the LPGs. So in this way, we may not be using solar panels, but we are using solar energy and we are at least saving some of the LPG in our college. Similarly, biogas, small, we can see the example in some much. And another point is that about the sensor-based energy conservation. If we happen to visit some hotels and all, we see that अगर हम hotels के अंदर जाते हैं तो the sources of lights and all they are turned on, and as we go out of the room वो जो है बंद हो जाते light electricity sources. So they have some sensory measures. This can be also used in institutions. If at all this is not possible, we can do some innovations. We can use one switch system, a single switch system which connects all the rooms. And yeah, there can be a switch outside the room which connects all the lights and fans that is being used in that particular room. So putting off that switch, we can put off all the electric sources off after they are being used after the college hours. So this can be a very innovation way. Even we can have a group of students, a team made, who would monitor that after the college hours they would visit the rooms and they would turn on off the switches to make sure that all the electric sources are put off. So these points would come under any other relevant information. It can be used as a measure to save energy. Even these LED bulbs are very good these days. It may cost
a little higher than the ordinary bulbs, but still they have long last durability. बहुत दिनों तक चलता है. So we can use this as a alternate source of energy. So in this way, by following small instructions and small innovative methods, we can save the energy of a college and get a good means electricity cut in the electricity bill of our college. Now coming to the second point is of this quantitative parameters is 7.1.4, water conservation facilities available in the institution. So in this parameter they have asked water conservation, what are the water conservation facilities that are available in the institution. They have again given 5 points: rainwater harvesting, borewell, construction of tanks and bunds, wastewater recycling, maintenance of water bodies and distribution system in the campus. So what all facilities we have to take, and then we have to produce geotech photographs or video related to the photographs in this criteria. So again, as I've told, I would focus on the small innovative ideas that even small colleges can try and use for water conservation. So first is rainwater harvesting. So if you are showing that you have rainwater harvesting in our college, so we have to produce along with this rainwater harvesting. If you are opting for yes, then you have to produce re- regarding its construction and you have a borewell. You too have to produce. आपको ये दिखाना पड़ेगा कि किससे आपने कंस्ट्रक्शन करवाया, कब करवाया, उसकी बिल, are we a bill regarding the maintenance of the borewell, everything you have to show. Then construction of tanks and bunds. These tanks, if you have tanks and bunds, are they covered? Because if they are open, it can lead to some accidents. So are they covered? So where it has been constructed, किसने किया, ये सब you have to show. And actually you can also suppose this in points, this last point, maintenance of water, we can also have some good water bodies, some fountains, some ponds like structure which also can beautify our campus, and it can be means it can come to the point of maintenance of water bodies. Then coming to wastewater recycling. So some big colleges or some which have all the facilities, they have this treatment plant, was wastewater recycling treatment plant. But what about the small colleges? So at least we can try some little bit innovative methods. Suppose we can show that all the wastewater that is coming out of taps or ROs are being directed or are they being directed to some construction like bunds where they are being stored and they can be reused water. So if not big, we can try out some small innovative methods or some new methods, and in this way we can act towards water conservation facilities, because we know we need to save and utilize each drop of water in a very productive and healthy way. Now
Coming to the next point is Green Campus Initiative. It is 7.1.5. So we all are very much environmental concerned these days. We have just celebrated Environment Day. हम सब environment concern है आजकल. Green campus only doesn't mean planting. Green campus only doesn't mean planting trees. It also means conservation. It also means finding out ways by which we can save the environment from pollution, finding out ways which can conserve the environment of the institution. So, here the first point is restricted entry of automobiles. Then the second one is use of bicycles, battery powered vehicles, pedestrian friendly pathways, ban on plastic, landscaping with trees and plants. So you have to choose one or the any five or all the five, which the all of the facilities that you have in your college, and along with it you need to produce geotech photos, videos, and one thing is main in this parameter, which is policy document. You should have a well formatted policy, green policy document, and this document should be in your website also, and it should be circulated, well circulated. So, coming to restricted entry of automobiles, so there you can can be some orders or some circulars from the head of the institutions where there is a restriction of automobiles, or maybe for the students, or maybe for the students who are living in the nearby, or we it promotes, it adds to your health. So we can even do some innovative ideas that in making a pedestrian friendly pathway, we can have some good plantation on the both side of the pathways. We can put some good quotations to encourage walking. We can have some paintings done in the branches of the trees. So it will make the pathways very attractive apart from labeling and smoothing the pathways. So it will encourage the fact have really a ban in the website. It can be painted on the walls. Circular can be pasted in all around the colleges. Even in the canteens, there should be a circular that only paper glasses and plates should be used, not plastic glasses and plates. So these small steps can be taken by the institutions to promote that green campus initiative. Now coming to the landscaping with trees and plants. So here many we can do such good innovation actually in this point. Nowadays, as I told you, all many of the colleges have such vast acre of land, and we have gardens at many places. Actually, this garden can be diversified into different zones. Zone बना सकते हैं, tulsi oxy zone. There can be a separate garden zone. There can be a plastic free zone. Even if we when the of land is so much, and there can be a place, ऐसा place भी हो सकता है जहाँ की ये पॉसिबल नहीं होता है कि उस कैंपस को पूरा साफ किया जाए, और वहाँ पे बहुत सारी ट्रीज और जंगल उगाते हैं. तो दैट प्लेस शुड नॉट लुक बैड कि वहाँ पे तो उन्होंने साफ ही नहीं करा, नहीं कहा कि यार इसने अपने तो साफ ही नहीं करा, यहाँ पे पूरा जंगल उगाया. नो, you show it as a forest zone. We can show it as a forest zone, that we have preserved a forest zone in our college. वहाँ पे कई तरह के बर्ड्स आते होंगे, तो हम उस तरह से एक
स्टूडेंट से बोल के कौन से बर्ड्स आते हैं वहाँ पे, किस तरह के फ्लोरा या फौना है उगा रहे हैं, उसको हम स्टडी कर सकते हैं फॉरेस्ट जोन में। या फिर फॉरेस्ट जोन में हम जो प्लांट जो ट्रीज उगा है उनकी हम बार कोडिंग कर सकते हैं कि हम कौन कौन से ट्रीज है वहाँ पे। तो ये एक बड़ा अच्छा आइडिया, अगर कोई एरिया आपका साफ नहीं हुआ है तो उसको हम फॉरेस्ट जोन करके शो कर सकते हैं। या फिर देयर कैन बी, और अगर आप प्लांटेशन हम लोग हर साल बहुत सारे प्लांटेशन करवाते ही हैं, सब कॉलेज करवाते हैं, तो क्यों ना हम एक जगह में फलों का वृक्ष एक जगह में प्लांट करवाए और ऑर्चर्ड जोन बना दी वहाँ पे कॉलेज में। तो उसमें बहुत सारे ये भी हो जाएगी कि ऑर्चर्ड जोन, अगर हम लोग कई बार क्या होता है कि हम कैंपस के चारों ओर, जो इस तरह के फ्रूट्स वाले प्लांट अगर लगा देंगे तो बाहर से लोग बहुत पत्थर फेंकते हैं या फिर दे ट्राई टू कम इनसाइड आवर कैंपस उन फलों को तोड़ने के लिए। सो इट्स बेटर कि आप एक कोने में उन ऑर्चर्ड जोन प्लांट कर रहे हो, वहां पे अगर आपके पास नींबू उग रहे होंगे या फिर वहां पे आम आ रहे होंगे या फिर आप चिल्लीज आपने मिर्ची लगाया होगा, सो यू कैन आस्क योर होम साइंस डिपार्टमेंट टू प्रिपेयर पिकल्स आउट ऑफ दैट। ये बहुत अच्छा हो सकता है। इससे क्या होगा, आपने वहां पे प्लांटेशन तो कर ही रहे हो, साथ में आपके फ्रूट्स जो आ रहे हैं आप पिकलिंग कर रहे हो, आप स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो होम साइंस डिपार्टमेंट में। और स्किल डेवलप करके आप पिकलिंग करके यू कैन गो इट फॉर सेल। आप कॉलेज में एनुअल फंक्शंस होते हैं, गैदरिंग्स होते हैं, यू कैन गो इट फॉर सेल, यू कैन कलेक्ट जनरल रिसोर्सेज फॉर योर कॉलेज। तो ये एक बड़ा सा छोटा सा मतलब एक इनोवेटिव आइडिया हो सकता है। तो हमारे पास इस तरह के छोटे छोटे आइडियाज से हम ग्रीन कैंपस इनिशिएटिव को हम बढ़ावा दे सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट 7.1.6, it is about quality or audit on environment and energy. 7.1.6, sir. So this point shows that have we undertaken audits regularly about green audit, energy audit, environment audit, clean and green. Then there is a point, clean and green recognition award beyond the campus promotional activities. So all institution we should, it's mandatory that we should go for all these audits, because हमें कई बार लगता है कि हम तो बहुत अच्छा ग्रीनरी का काम कर रहे हैं, एनर्जी भी कंजर्व कर रहे हैं, हमारे कॉलेज का एनवायरनमेंट इज सो नाइस, बट पहले आप, when we get audited by some external source, then we come to know about your limitation, about our position, what all means we have done regarding this fact. तो ये भी है कि आप पहले ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट करवाने से पहले यू शुड गो फॉर इंटरनल ऑडिट। एक बार इंटरनल ऑडिट करवा ले उसके बाद शुड गो फॉर एक्सटर्नल ऑडिट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड सोर्सेस। आजकल स्वच्छ भारत अभियान बहुत अच्छा निकल पाया और स्वच्छ अभियान पे बहुत वर्क किया जा रहा है और इस पे अवार्ड्स भी दिया जा रहा है, कॉलेज को रिकॉग्नाइजेशन दिया जा रहा है कि यहाँ पे कितना स्वच्छ, मतलब स्वच्छता अभियान पे। तो कई कॉलेजेस को क्लीन एंड ग्रीन रिकॉग्निशन अवार्ड्स मिले, इसका आप शो कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज को 2016 में हमको यंग लीडर्स अवार्ड मिला था। वो हमने जो स्वच्छता अभियान जो हमने वर्क करा था विलेज में जाकर, और हमने जो कॉलेज में एक हर्बल गार्डन ग्रो किया था, उस बेस पे हमको इंडिया लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमको थर्ड प्राइज मिला हुआ था। सो दिस, so even small colleges can work and get awards. So there are scope everywhere. So we need to learn from every and each and every colleges what are their good points. So when we come to beyond the campus promotional activities, here NSS and NCC, they can play a very vast role. आप जानते हो कि जो NSS है वो they organize camps in villages, in different villages everywhere, and they have adapted many villages. तो यहाँ पे वो बहुत promotional activities
कर सकते हैं regarding environment, awareness of environment. They can do activities related to plantation. They can create awareness programs in many ways. Okay, so इस तरह से ये point को हम deal कर सकते हैं. So now let's come to the next point of quantitative indicator. This one is 7.1.7. Institution has disabled friendly, barrier friendly environment. So we all know, हम सब जानते हैं institution में कई students होते हैं, those are दिव्यांगजन, but it becomes our responsibility. जैसे कि एक दिव्यांगजन को उनके घर में पूरी सुविधा दी जाती है. Similarly, when that student comes to our college, we should provide all the facilities needed by that student, that so that he or she may feel at home. उनको, क्योंकि he or she also has the right for education. अगर हम उनको फैसिलिटी इंस्टीट्यूशन नहीं देंगे तो शायद वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट या परस्यू ना कर पाए अपने इंस्टीट्यूशन में. और हर एक पेरेंट किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूशन में अपने स्टूडेंट्स को, अपने वार्ड को एडमिशन से पहले they are very particular. They assure that if the institutions are having the facilities regarding divyangjan. Okay, so in this case the points that are given, that whether we have ramps or lifts. If a college is multi-storied, then we need, it's mandatory that we should have a lift. Otherwise, for if you are two-floored, we should at least have a ramp, because many of the Divyangjan, they may be coming in the wheelchairs, or even nowadays many of the students and the faculties may have some problem in walking or some knee problem. So in this way, a ramp can come to their aid. So at least the ramp is very much mandatory. Then coming to the washrooms or the restrooms, we should have a separate washroom or restroom for this Divyangjan. It should be very cleaned so that they should not take any infection from there. They should have a proper supply of water. They, they should be according to the norms that is needed for the Divyangjan. We should be very particular. And here policy document is very much mandatory in this parameter. We should have a clear policy, and that should be also in our website, and that should be also mentioned in our prospectus, so that before the student take admission, he or she should know what are the facilities that would be provided to them by the institution. So we should also make signage, which also make facilities for the signposts, for the braille, for so the Divyangjan friendly software, and also there should be human assistant is very much mandatory, because if it may happen that one has to need to be escorted to the washroom, उनको washroom ले जाना पड़े, तो मेल और फीमेल इस तरह के आपको ह्यूमन असिस्टेंस प्रोवाइड होनी चाहिए कॉलेजेस में. Okay, and this there should be scribe or readers in the examination. You should also have these wheelchairs in case, okay, it is needed by the Divyangjan. So in this way, we can provide all the facilities by the Divyangjan. So institution is just like your another home, and you should are very much welcome to the institution. I remember incident when once there was a boy, and he didn't means he had a very bad accident, and he both his hands were not there, means from this fingers portion, means he didn't have the fingers actually. But you know, he was a very good NSS volunteer. He would willingly participate
in every activities. और मैं 14 years एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर थी, मैंने कभी उसको मना भी नहीं किया, बिकॉज आई कुड सी हिज एंथुसिज्म एंड हिज पेरेंट्स आल्सो परमिटेड, नो, इफ यू वांट लेट हिम प्लीज अलाउ. So he was so much willing to do in this. हम जब भी रैलीज होता था, कुछ भी इस तरह नुक्कड़ नाटक होता था, वो हमेशा पार्टिसिपेट करता था. And you won't believe, no, these banners he was willingly would hold. He would tie these banners to his hands, okay, but he wanted that he should hold a banner. So if they are willing to be a part of your every activities, why not? Even I remember there was a girl, she was on crutches, but she wanted to be a part of the NSS camp. Even she brought her even permission from her parent. And I tell you, I took her to the camp. But I took her to the camp and she was during the day with all the volunteers. They helped her, but I asked her parents to carry her back home in the evening because it may be miss, miss, it may be difficult for her to be in the camp at night. So we need giving some example is that they need to be a very much a part of a college and a very much similar to all the students. इसलिए हमें उनको हर तरह से हमें मौका देना चाहिए कि दिव्यांगजन को भी लगे कि वो हमारा पार्ट है और वो सब प्रोग्राम्स में वो शामिल हो सकते हैं. दे आर नॉट डिफरेंट. सो नेक्स्ट कमिंग to the next point of quantitative parameters is 7.1.10. It is about code of conduct. So, a code of conduct, as ये criteria का नाम ही है, institutional values and conduct, they go side by side. Without values, we can't have code of conduct, and code of conduct is very much mandatory to have values in an institution. So again, in this parameter, Nick wants to know for students, teachers, administrators, and other staff, and conducts periodic programs in this regard. So again, there are 4 points, और आप जिसमें भी आप अपने इंस्टीट्यूशन में करवाते हो, आपको यहाँ पे ऑप्ट करना पड़ेगा. So coming in this point, I want to say that again the policy document is very much mandatory. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पॉइंट में. आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए जिसमें सब क्लियर होना चाहिए कि स्टूडेंट्स के लिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, टीचर्स के लिए, फॉर ऑफिस स्टाफ, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, एवरीथिंग देयर शुड बी ए क्लियर कोड ऑफ कंडक्ट. और एक कमिटी भी होनी चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट मॉनिटरिंग कमिटी, जो समय समय पे मॉनिटर करे. जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा कि जब कोविड हुआ था, जब हम सब लॉकडाउन पे थे, तब कितना कोड, जो कोविड का भी अलग कोड ऑफ कंडक्ट था. वी शुड maintain the distance, we should wear mask, we should sanitize everything. So everything needs a code of conduct. एग्जामिनेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होनी चाहिए ताकि आप अनफेयर मीन्स पे आप चेकिंग कर सको. एंड कॉलेज जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम होने चाहिए कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या है इस कॉलेज का. सो अब बहुत सारे प्रोग्राम्स इसके रिलेटेड हम करवा सकते हैं कॉलेज में. जैसे फॉर एग्जांपल इंडक्शन, ड्यूरिंग इंडक्शन प्रोग्राम्स हम वी कैन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कोड ऑफ कंडक्ट, कॉलेज का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, और उसको ना फॉलो करने से व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस, उसको क्या उनको पनिशमेंट हो सकता है. तो ये भी उनको बहुत क्लियर होना चाहिए. प्रोस्पेक्टस में भी आपको होना चाहिए कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या है. हम बहुत सारे कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन करवा सकते हैं कि उनको ये मालूम करने के लिए बच्चों को कोड ऑफ कंडक्ट मालूम है कि नहीं.
हम गेस्ट लेक्चर्स करवा सकते हैं रिगार्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट, तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे वर्क किया जा सकता है। तो ये सब जब भी हम एक्स्ट्रा कुछ करवाते हैं, एनी अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम इस तरह से हम उस पॉइंट में हम उसको इंक्लूड करते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। सो नाउ कमिंग टू द क्वांटिटेटिव qualitative metrics. Okay. So 7.1.1. So next 7.1.1. So this is the qualitative metrics 7.1.1. It is about gender equity. So here we have been asked measure initiated by the institution for the promotion है word gender curricular and co-curricular activities facilities for women on campus। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिसको कि हम आंसर करते समय हमको फॉर यंग चिल्ड्रन एंड another that is last point any other relevant information। So lots of work can be done in gender equity because there are different type of colleges, some are co-education colleges, some are girls colleges, some there can be even a boys college, some colleges are from, if you see that in villages there the number of girls are, the strength of the girls are lower compared to boys, and in urban places the strength there will be more number of girls compared to that in villages। So in this equity, in this parameter we have to make sure kya are we the education is leading to skills, are we giving skills to the girls, are we giving some financially independence training about the financial independence to our girl students, are we giving them legal rights, क्या हम उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कैंपस में हमने फैसिलिटीज किया हुआ है, क्या हम उनके वेंडिंग मशीन्स है, क्या वहाँ पे सीसीटीवी और गार्ड्स कॉलेज में अवेलेबल है, क्या हम गर्ल्स के कॉन्फिडेंस ग्रो करने के लिए हम कुछ कर रहे हैं, क्या हम गर्ल्स के मेंटल हेल्थ और मेडिकल इश्यूज के लिए हम कुछ कर रहे हैं, क्या हम गर्ल्स को कैरियर काउंसलिंग दे रहे हैं। Here, women cell, prevention of sexual harassment cell, they can play a very much active role। सो इवन हम कॉलेज में हम ड्रॉप बॉक्स रख सकते हैं, कुछ गर्ल्स जो है जो अपने जो भी ग्रीवेंसेस है दे कांट से डायरेक्टली दे कैन पुट इन द ड्रॉप बॉक्स। सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स कैन बी arrange for creating this gender equity or sensitization towards gender equity। हमको वॉल्स में होनी चाहिए, पुलिस असिस्टेंट के फोन नंबर्स होने चाहिए, टीचर्स इंचार्ज उनके फोन नंबर्स और कॉन्टेक्ट नंबर्स होने चाहिए वॉल पे। उनको जब भी इस तरह के कुछ भी प्रॉब्लम्स आए वो दे कैन अप्रोच। फिर there we can also give personal counseling and guidance about their health। We can organize programs like Beti Bachao and Beti Padhao, many campaigns on women rights, empowerment, okay, some job oriented programs। सो यू कैन सी दैट वहाँ पे सही मायने में गर्ल्स के लिए ऑल अरेंजमेंट है कि नहीं, प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट, एवरीथिंग इज देयर और नॉट। वी कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज प्रोग्राम ड्यू टू पॉस्को एंड ऑल मेडिकल चेकअप भी हम उनको ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। तो इस तरह से हम गर्ल्स के जेंडर इक्विटी प्रमोशन के लिए हम बहुत सारे वर्क करवा सकते हैं। सो नेक्स्ट कमिंग टू 7.1.3, it is about facilities in the institution for the management of non-degradable waste। So, in this point, they are asking about the solid waste management, liquid waste management, how we are managing the liquid waste, how we are managing the biomedical waste
e-waste and hazardous chemical and radioactive waste. So in solid waste, there we can do small innovative ideas. Actually, there we can have different types of these dustbins, not plastic dustbins, आप टीन के डस्टबिन या फिर हम जो ड्रम्स होते हैं स्टील वो यूज कर सकते हैं. Okay, or we can get dustbin made out of cement and all. We can even use the earthen ponds at dustbin and get them nicely painted. सो इस तरह से हम डस्टबिन अलग अलग तरह से हम यूज कर सकते हैं. कॉलेज में हम देखते हैं कि ऑफिस में कई तरह के पेपर्स, रफ और वेस्ट पेपर जनरेट होते हैं. तो हम उसमें बहुत सारे इनोवेशंस कर सकते हैं उस पेपर्स को एनवलप्स बनाने के लिए, पैकेट्स बनाने, हम बैग्स बनाने के लिए हम किसी डिपार्टमेंट हम बनवा सकते हैं. एंड दे कैन अगेन इट विल पार्ट ऑफ स्किल, दे कैन गो फॉर सेलिंग एंड जनरेट रिसोर्सेज. इस तरह से कर सकते हैं. अगर हम इसको वेंडर को बेच रहे हैं तो वी शुड हैव अ प्रॉपर रिकॉर्ड, हमको उसको रखना पड़ेगा. इवन सम ऑफ द इंस्टीट्यूशन दे आर हैविंग लीफ क्रशर मशीन और पेपर रिसाइकलिंग यूनिट भी होता है. तो हम कंपोस्ट भी, हम जो लीव्स वगैरह जो जमा डेली जो कॉलेज से जो निकल आते हैं उसको हम कंपोस्ट में डाल के जो मैन्यूअर है वो that they can be used for the plants and our gardens. उसी तरह लिक्विड वेस्ट जो है हमको ये देखना है कि जो वाटर टैप से जो जहाँ से लिक्विड वेस्ट वो कहाँ पे डायरेक्टेड है, वो इस तरह से डायरेक्ट हो जाके कहीं पे यूज हो सके, गार्डन की ओर हो, या फिर हम उसको कहीं पे अगर यूज करने लायक वाटर है तो यूज करके हम मॉपिंग एंड स्वीपिंग के लिए, वॉशिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं. इवन जैसे मैंने पहले भी कहा था, इवन एसी वाटर को भी हम यूज करके हम क्लीनिंग कर सकते हैं, जो कि हम अपने कॉलेज में करते हैं. एसी वाटर के बकेट्स में स्टोर करके हम उसको क्लीनिंग के लिए बरांडा वगैरह हम यूज करते हैं. सो फिर बायोमेडिकल वेस्ट का जो है हम, जैसे कि यहाँ पे मेन है, जैसे कि यहाँ पे पैड डिस्ट्रॉयर जो इंसिनेटर्स है वो है कि नहीं, उसमें हम पैड्स को ऐश में ट्राई कर टर्न कर सकते हैं. देन हमारे कॉलेज में बहुत तरह के ई वेस्ट होते हैं, जैसे कि पुराने प्रिंटर, सीपीयूज, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. तो पहले तो हमको ये देखना है कि हम उसको रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं. हम स्टूडेंट्स के द्वारा उनको, कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको, या फिर फिजिक्स डिपार्टमेंट या साइंस के, उनको ट्राई कर सकते हैं क्या इनको रीयूज किया जा सकता है, या फिर इनको क्या दे कैन बी मेंडेड. जैसे हमारे यहाँ पे फिजिक्स डिपार्टमेंट वो इस तरह के जो ई वेस्ट है उनको यूज करके वो लो वेस्ट, लो कॉस्ट एपरेटर्स वो बनाती है. तो ये इट्स अ वेरी गुड आइडिया. फिर हमको ये भी देखना है कि जैसे कि इस पॉइंट में है कि जो व्हाट हैज जो केमिकल्स वगैरह हैं, तो उसके लिए भी हमको एक पॉलिसी बनानी है. जो हैजार्डस केमिकल्स अगर है केमिस्ट्री लैब का या फिर माइक्रोबायोलॉजी, तो फिर उसके लिए हमको एक पॉलिसी बनाना है कि हम इसको कैसे डिस्पोज करें. उसके लिए विद द हेल्प ऑफ आईक्यूसी शुड मेक एन एडमिनिस्ट्रेशन शुड मेक एन पॉलिसी. और फिर हम कुछ एमयू में भी जा सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो कि हमारे यहाँ से वेस्ट कैरी करके डंप करे. तो इस तरह से हम इनको डिस्पोज करना बहुत जरूरी है इन अ हेल्दी वे, so that it doesn't causes damage to people, not to animals, and even not to environment. तो ये हमको बहुत इसका particularly हमको we should be aware of it. So now coming to the next point is 7.1.8, inclusion, tolerance and harmony. So इस पॉइंट में they have asked, describe the institutional efforts initiative in providing an inclusion environment, tolerance and harmony, cultural, regional, communal, socio-economical and other diversities. यहाँ पे फिर से हमको डिस्क्राइब करना है 500 पॉइंट्स में. हमारे कॉलेज में कई जगह से, फ्रॉम रूरल एरिया, फ्रॉम अर्बन एरिया, अदर स्टेट्स, अदर लैंग्वेज, अदर रिलीजन, सभी तरह के स्टूडेंट्स होते हैं. तो हमें ये देखना है हम उनके लिए क्या कर रहे हैं. फर्स्ट तो होता है जैसे एडमिशन पॉलिसी. एडमिशन पॉलिसी के लिए हम कॉलेज में से वी डोंट हैव एनी रोल, इट हैज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट और गिवन बाय द यूनिवर्सिटी, बट एटलीस्ट वी कैन बी अश्योर्ड कि हम कॉलेज वाले जो रिजर्वेशंस वगैरह जो रूल्स जो आए हैं, आर वी फॉलोइंग इट. तो ये हम अश्योर कर सकते हैं. फिर जो अलग अलग जो फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे दिवाली हो गया,
ईद हो गया, क्रिसमस हो गया, हम सब faculties बैठ के हम सब फेस्टिवल्स हम we can celebrate and it creates a very much tolerance and harmony among the people. फिर हम देखते हैं कि हम कई बार फैकल्टीज के बर्थडेज इस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं, उनके यहाँ पे हम जाते हैं फंक्शंस में, उनकी वेलकम, उनका फेयरवेल। पर आर वी डूइंग सेम फॉर द क्लास 3 और क्लास 4 एम्प्लॉयज? उनका भी हमें करना चाहिए ताकि किसी तरह से बाइफर्केशन ना रहे, सोशियो इकोनॉमिक गैप या फिर इस तरह से क्लास 3 क्लास 4 इस तरह से हमें कोई बाइफर्केशन ना दिखे, बहुत टॉलरेंस एंड हार्मनी दिखे। हमको उनके भी हर एक फंक्शंस में जाना चाहिए और इंक्लूड होने चाहिए, और वो हम पुट कर सकते हैं हमारे एसएसआर में कि हमारे क्लास 4 या लाइब्रेरियन का या फिर ये हमारे यहाँ पे स्वीपर का, उनके हम किसी वहाँ पे हमने जो गए हम वहाँ पे हमने शामिल हुए। तो इस तरह के वी शुड अश्योर दैट वी शुड बी पर्टिकुलर दैट वी आर ट्रीटिंग ईच एंड एवरीवन एज इक्वल। उस तरह के हमको माहौल हमको कॉलेज में क्रिएट करना चाहिए। अदर देन दैट हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि यूनिटी डे, कौमी एकता डे, नेशनल इंटीग्रेशन डे, इस तरह के डेज भी हमको जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि हमको स्टूडेंट्स को एक तरह से मैसेज जाए, अवेयरनेस जाए that we all are one. There is no bifurcation in the college regarding culture, religion, linguistic or communal factors. Now, coming to the next point is 7.1.9. It is about sensitization of students and employees of the institution to the constitutional obligation, values, rights, duties, and responsibilities of the citizen. So we all know we are the citizens of India, और हमारे students जो है वो नए citizens, they are new citizens because they have got the right to vote just now. वो 18 years या उनके आसपास होते हैं जब वो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो उनको वी शुड बी वेरी मच पर्टिकुलर कि हमारे कॉलेज में फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रिएम्बल, फंडामेंटल राइट, ये सब पेस्टेड है कि नहीं प्रिंसिपल ऑफिस में या फिर लाइब्रेरी में और इन इम्पोर्टेंट प्लेस, ये सब है कि नहीं? does the students know about all these things? क्या बच्चों को नेशनल सिंबल्स, हमारे मार्टियर्स के बारे में मालूम है कि नहीं? तो वी शुड मेक इट वेरी मच श्योर, खासकर हम कुछ जैसे ह्यूमन राइट्स डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे, आर्म फोर्सेस डे, ये हमें जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि बच्चों को अपनी कंट्री पे अवेयरनेस, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, अपने राइट्स एंड ड्यूटीज, और ड्यूटीज फिर यहाँ पे जो और एक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन, सिटीजन होने की जो उनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स को जरूर उनको जानना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे सब सब कॉलेज में स्वीप प्रोग्राम, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ये प्रोग्राम हमेशा सेलिब्रेट किया जाता है, हम सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें हम कई तरह के बच्चों को शामिल करें, कई प्रोग्राम्स करें, नुक्कड़ नाटक, रैलीज, डोर टू डोर कैंपेन, इस तरह से सॉन्ग, स्लोगन्स, इनको हमें बच्चों को जरूर शामिल करना चाहिए। इसके लिए एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, नेक्स्ट क्लिपिंग में मैं दिखाना चाहूंगी। सर नेक्स्ट वन, नेक्स्ट नेक्स्ट एक फोटोग्राफ है सर, नेक्स्ट। हाँ, ये एक स्वीप प्रोग्राम है सर, नेक्स्ट। ये फोटो पे रखेंगे सर, उस क्लिपिंग पे ही रखेंगे सर, फोटो पे। हाँ, ये एक बहुत अच्छा हमारे कॉलेज का एक क्लिपिंग है, स्वीप प्रोग्राम का है। हमने स्वीप प्रोग्राम से बेस्ड एक हमने रंगोली कंपटीशन करवाई थी। तो हमारे यहाँ पे एक स्टूडेंट है सुखनंदन, उन्होंने जो बीच में जो सर्कल किया हुआ, हाईलाइट किया, वो रंगोली उसने उसका बनाया हुआ है। ये स्वीप के बेस्ड है, वोट दो करके लिखा हुआ है। और इट वाज सच ए नाइस एंड प्रेस्टीज फॉर द कॉलेज कि इस रंगोली को जो स्वीप का जो वैन, गवर्नमेंट ने जो वैन बनाया, उस पे उन्होंने इस रंगोली को उन्होंने चूज किया है पेस्ट करने के लिए। देखिए उसका उसका रंगोली, सुखनंदन का रंगोली यहाँ इस वैन पे भी है। तो इस तरह से बच्चे को आगे आकर बहुत सारे इनोवेटिव कर सकते हैं। तो ये बहुत बहुत छोटा एग्जाम्पल था, हम इस तरह से बहुत they have lots of responsibilities as well as duties. Next is 7.1.11. It is 11 point जो पैरामीटर है, it tells us about celebrates organized national and international commemorative days, events and festivals. So
सो वी यहाँ पे बहुत सारे जो डे नेशनल फेस्टिवल्स जो जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, रिप डे, वो हम पूरे नॉर्म्स के साथ कर रहे हैं कि नहीं। हमें कई बार को होता है ये डेज तो हम सेलिब्रेट करते हैं आकर, और किसी तरह हम वहाँ पे, पर बच्चों को भी हमको जरूर उनके लिए भी नोटिस होनी चाहिए कि बच्चे भी जरूर आए इस डेज में, क्योंकि ये उनकी कंट्री है। दे शुड आल्सो सेलिब्रेट दिस इंडिपेंडेंस डे, दिस गांधी जयंती, दिस रिपब्लिक डे। बच्चों के लिए भी नोटिस होनी चाहिए। फिर योगा डे, योगा डे तो हमारे कंट्री के लिए प्रेस्टीज है, हमारे कारण पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। वुमेन्स डे, एनवायरमेंट डे, लिटरेसी डे, हिंदी दिवस, इस तरह से बहुत सारे जो डेज है हमको जरूर हमको इनकलकेट करना चाहिए हमारे कॉलेज के उसमें कैरिकुलम, मतलब डेज में, सेलिब्रेशन में, फंक्शंस में। और इसके लिए पहले से एक शेड्यूल, एक हमको एक चार्ट बनाना चाहिए, और उसको देखते हुए हमें पहले ही मालूम होना चाहिए कि हमको ये डेज करना है। यहाँ पे जैसे कि एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगी हमारे कॉलेज का, जैसे कि वैलेंटाइंस डे। तो वैलेंटाइंस डे के लिए हम जान रहे हैं, हम सब बहुत विद्रोह कर रहे हैं, और इसलिए हमने उसको मातृ पितृ दिवस भी हमने मनाया। पर मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि हम जो है इंग्लिश डिपार्टमेंट में खासकर वैलेंटाइंस डे को हम क्या करते हैं, वैलेंट ट्विस्ट डे मनाते हैं। ये किस तरह से, व्हाट इज वैलेंट ट्विस्ट डे? हम उस दिन क्या करते हैं, वैलेंटाइंस डे में क्या है, वी शो, मतलब इन वैलेंट ट्विस्ट डे हम क्या करते हैं, वी शो आवर लव टुवर्ड्स आवर हॉबीज। आपकी इंक्लाइनेशन, आपकी जो हॉबीज है, आपकी जो रुझान, आप जो करना चाहते हो उसके प्रति लव, हम इस तरह से एक वेबिनार या फिर हम ऑर्गेनाइज करते हैं कि आपकी क्या ड्राइंग में इंटरेस्ट है, आपकी पेंटिंग में, आपकी सिंगिंग में, अब उसके बारे में बताइए। अगर आपकी किसी क्राफ्ट में, तो आप क्राफ्ट को ला के दिखाइए। अगर सिंगिंग, आप सिंगिंग करिए। तो हम इस तरह से वैलेंट ट्विस्ट, उस वैलेंटाइंस डे में हम उसको वैलेंट ट्विस्ट देकर लव टुवर्ड्स योर हॉबीज, ओके, इस तरह से हम उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम छोटे छोटे इनोवेशन से हम कॉलेज में स्टूडेंट्स में नए एग्जाम्पल हम डाल सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू इंडिकेटर 7.2, बेस्ट प्रैक्टिस। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है, इस पैरामीटर्स में क्या रिक्वायर मैंने सबको बता दिया। नाउ कमिंग टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो बेस्ट प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन। आपके कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे प्रैक्टिसेस होते होंगे, हमारे सबके कॉलेज में हम कई अच्छे काम करते हैं, बड़ी सारे प्रैक्टिसेस करते हैं, पर उनमें से बेस्ट क्या है? बेस्ट, जैसे इंग्लिश में है ना, यू नो इट्स सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट। तो जितने भी प्रैक्टिसेस करते हैं उसमें से जो बेस्ट प्रैक्टिस है, उसको हमको, दो बेस्ट प्रैक्टिस को हमको शो करना होता है। तो जो ये बेस्ट प्रैक्टिस जो वो कॉलेज का पार्ट ही होता है, जो आप कई सालों से करते आ रहे हैं। इट हैज नॉट बीन लेविड और प्रिस्क्राइब्ड बाय सम अथॉरिटी, इट इज वेरी मच पार्ट ऑफ आवर कॉलेज। उस कॉलेज में कई सालों से वो चलता आ रहा है, और वो आपकी जो बेस्ट प्रैक्टिस, वो शुड बी इन अलाइनमेंट विद योर मिशन एंड विजन। उसमें भी मेंशन्ड है, उसी के अलाइनमेंट से आप बेस्ट प्रैक्टिस करते हो। तो बेस्ट प्रैक्टिस में जो है आप, लेकिन इसके कई सारे एक फॉर्मेट दिया, उसको हमको फॉलो करना होता है कि पहले हमको टाइटल, हम कौन सा बेस्ट प्रैक्टिस करने वाले हैं और उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको हमको डिस्क्राइब करना होता है। फिर हम किस तरह से हमने उसकी जो हमने फॉर्मेट तैयार किया, इस वर्क को हम किस तरह से करेंगे, ठीक है, हम उसकी डिजाइनिंग हमको बनानी होती है। फिर हम उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं उस वर्क को, वो बताना पड़ता है। फिर जब इम्प्लीमेंट वर्क हो जाता है, तो आपको ये दिखाना पड़ता है कि आप उस वर्क को आपने इम्प्लीमेंट तो किया, क्या आपको सक्सेस मिला, आपको किस एविडेंस, आपको किस मायने, किस फैक्टर से मालूम चल रहा है कि आपको सक्सेस मिला, वो एविडेंस देना भी बहुत जरूरी है। देन आप कोई भी वर्क करते हो, आपने जो प्रॉब्लम फेस करते हो उसकी भी आपको जानकारी देनी होती है। क्योंकि वो जो, अगर किसी कोई और कॉलेज आपके कॉलेज से अगर एनकरेज होकर वो भी अगर उसको अपने कॉलेज में यूज करना चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए कि आपने क्या फेस किया है, तो उसके लिए पहले से तैयार रहेंगे। तो आपको जरूर बताना चाहिए क्योंकि आपने क्या प्रॉब्लम फेस किया। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस
इस तरह से आपको 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस अपने कॉलेज को, और हर साल ये बेस्ट प्रैक्टिस चेंज होता जाएगा, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट ईयर फिर और कुछ नया वो चीज बेस्ट हो गया। तो इस तरह से आपको बेस्ट प्रैक्टिस आपको चेंज करते जाना है हर असेसमेंट में। Now the last we have coming to the last indicator 7.3, institutional distinctiveness. So when it's come to institutional distinctiveness, you know all college are distinctive in its own way. सब कॉलेज अपने तरीके से यूनिक होता है। आपका कॉलेज 30 साल का हो, आपका कॉलेज 15 साल का हो या 10 साल का हो, आप बस स्टडी करिए कि आप इन 10 सालों में, 15 साल या 30 सालों में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो आपके कॉलेज को अलग खड़ा करता है। इट मेक्स योर कॉलेज वेरी मच यूनिक, विच मेक्स योर कॉलेज स्टैंड अपार्ट। आपको ये स्टडी करना है। आपका कॉलेज का एक्चुअली ब्रांड नेम है। हो सकता है वो कई चीजें से हो सकता है। आपने प्लेसमेंट का रिकॉर्ड किया होगा, प्लेसमेंट बहुत अच्छा आए होंगे, या फिर आपके कॉलेज का रिजल्ट बहुत अच्छा आया होगा, या फिर आपने बहुत सारे सोशल वर्क बहुत अच्छे करवाए होंगे, या फिर स्पोर्ट्स में या फिर कल्चरल एक्टिविटीज में आप आउटस्टैंडिंग होंगे। तो इस तरह के कई चीजें हो सकता है जिसमें कि आप आउटस्टैंडिंग हो। तो उस डिस्टिंक्टिवनेस को यहाँ पे आपको 1000 वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करना विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, उसके फोटोज, उसके रेलिवेंट पिक्चर्स, उसके ऑर्डर्स, आपको ये सबको यहाँ पे आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्राइटेरिया 7। आई थिंक आई कुड हैव एक्सप्लेन्ड वेल। मैंने अपने तरीके से कोशिश करी कि मैं आपको हर बताऊं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। We will try to follow your valuable suggestion and guidance. आपने जो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को क्लियर किया मैडम, वाकई में वो काबिल तारीफ था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम हमारी संस्था की तरफ से। और वो सबक जो आपको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, और आप इस लेक्चर से जो लाभान्वित हो रहे हैं, थैंक यू सो मच मैडम। मैं बड़ा थैंक्स के लिए डॉक्टर एक सेकंड लाइट जला दो। ऊपर वाले दो सेंटर के हाँ सेंटर वाले पूरे 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 जला दो। साथियों, 7 क्राइटेरिया की क्वांटिटी क्वालिटी बेस्ड डिफाइन मैडम ने बताया बहुत विस्तृत रूप से। 7 क्राइटेरिया के प्रभारी और सभी प्राध्यापक ने बहुत ध्यान से भी सुना होगा। ये देखना है क्या इतने जो बातें बताई गई वो तैयारी हमारी है, नहीं है तो क्राइटेरिया की टीम को इस पॉइंट में दिए गए अनुसार काम प्लानिंग प्रोग्राम बनाना है। आप सभी ने देखा 7.1.7। अब बहुत से लोग बैठे हैं, बहुत चर्चाएं कर रहे थे पीछे, शायद हो सकता किसी पॉइंट की चर्चा हो रही होगी। तो मैं 7.1.7 में पूछना चाहता हूँ, कोई 2-4 चीज बताओ क्या